Now, the first thing regarding sound waves is, what type of wave is it? Transverse wave. First, it is not a transverse wave, it is a longitudinal wave. Yes, longitudinal wave, and it requires material medium. That's why it is a what wave? Mechanical wave. Okay. So sound is an example of mechanical longitudinal wave. So since it's mechanical wave, it requires material medium for propagation. Material medium नहीं होगा तो वो propagate नहीं. Right. So we can show this with the help of experimentation. You have done it previously, like in junior classes. You have done that bell jar experiment, जिसके अंदर से एक बेल हैंग करके हम लोग स्विच ऑन करते हैं, बेल का आवाज सुनाई देता है, पर नीचे से वैक्यूम से जब हम लोग एयर पुल आउट कर लेते हैं तब साउंड और सुनाई नहीं देता है. So it's a very simple experiment जहां पर एक टेबल होता है, टेबल के ऊपर एक बेल jar लगा हुआ होता है और ये बेल jar का सेंटर से यहाँ से एक बेल सस्पेंडेड रहता है. तो जब ये टेबल का नीचे से एक वैक्यूम मतलब एक कनेक्शन आउट रहता है जिसमें से हम लोग एयर को विथड्रॉ कर सकते हैं. सो जैसे हम लोग बेल को स्विच ऑन करेंगे तो आवाज क्लियरली सुनाई देगा हम लोगों को, बट एज वी ग्रेजुअली टेक द एयर आउट ऑफ दिस बेल जार, you will see, listen, that sound is getting fade, and finally you don't listen to any sound. And since it's a wave, you all know that it requires a vibration for the wave to start. So any source of sound wave is a vibrating source. मतलब कोई भी vibrating source ही sound produce कर सकता है, otherwise not. Clear? Yes, sir. Now the next concept. Next concept is the speed of sound. So sound is a longitudinal wave, that's true. So longitudinal wave, when moves through a region, it moves with the help of compressions and rarefactions. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है that the sound moves through air, which can be taken as or visualized as some layers, like this. What happens when the vibration hits the first layer? It compresses the layer. And then this compression hits the next layer, then that compression hits the next layer, and so on. So the point where the compression takes place, next to the compression, there will be a region of rarefactions. So this is exactly what happens. Some places of compressed and some places of rarefied areas. So this is one rarefaction, this is another compression, then rarefaction, and sir distance की particularly মানে কোন একটা particular distance থাকবে না, আপনার particular distance এর জন্য নয়, মানে এখানে the air layers vibrate to and fro, that's it. সামনে পেছনে ভাইব্রেট করে, সেই জন্য compressions আর rarefactions create করছে. So what is happening at compression? The term compression, what comes in your mind when you listen to the term compression? मतलब pressure increases, right? When we are saying compression, we are compressing something. That means the pressure at that point increases. ठीक है? और जहां पर rarefactions है, वहां पर pressure decrease हो जाता है. And this is how the sound wave moves from one point to another. Is that clear? On the basis of this concept, Newton tried to find out the formula for velocity of sound through gases. ठीक है? So first, when we are doing the velocity of sound, let's do it from the first thing, like the solids and then liquids, and then we'll go into gases. Okay. So velocity of sound through solids. Sound. Do you have this conception that sound travels the fastest through solids and the slowest through gases? Yes, sir. ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने पहले previous classes में. हाँ. So velocity of sound in any medium is given by the formula under root of elastic factor by inertia factor. ठीक है? Elastic factor by inertia factor है. ठीक है सर?
नाउ इन केस ऑफ सॉलिड्स, फॉर सॉलिड्स के लिए क्या होता है? टेल मी. फॉर सॉलिड्स वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम is equal to under root of y by rho. Y is obviously the Young's modulus and rho is the density of that medium. For gases, sorry, for liquids, স্যার আমরা ইনার্শিয়া বলছি তারপর ডেনসিটি লিখছি. inertia density contains mass. Mass is the measure of inertia. Per unit volume নিচ্ছি কেন? কারণ আমরা obviously ভলিউমটাকে কোয়ান্টিফাই করতে পারছি না সেজন্য, ঠিক আছে? So for liquids we write it as root over of B by rho. You know what is B? Right. B is the bulk modulus. ठीक है? Y is the modulus of Young's modulus. हाँ, उसको K भी लिया जाता है. So even if you want to write it as K, you can write it. But over here, if you are writing, just do specify Y is the Young's modulus. Young's modulus and B is the bulk modulus. So, अच्छा liquids यहाँ यहीं पर हम लोग एक काम करते हैं, liquids and gases. Liquids and gases. For liquids and gases दोनों के लिए bulk modulus by density किया जाता है. Alright? So what Newton did? Newton took the he tried to figure out a formula. ठीक है? So Newton's formula. Now what Newton did, he thought that when sound passes through a medium, obviously compressions or rarefactions जो हो रहा है, ये एक process से pass कर रहा है. Now what process he tried to assume that since there is no any change in temperature, no perceptible change in temperature found in the gas. Like say if you are talking inside a room, it does not mean कि room का temperature बढ़ता जाएगा. ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता. Room का temperature normally रहता है, right? So what he assumed that when the sound passes through gas, it creates an isothermal process, constant temperature process. So according to Newton, the passage of sound waves through a medium obeys isothermal process. Now isothermal process में प्रेशर और वॉल्यूम कैसे रिलेट होते हैं एक दूसरे के साथ? PV equal to constant, pressure and volume constant. And by definition, bulk modulus का definition क्या है याद है तुम लोगों को? Del P dP by dV by V, right? अरे माइनस से चलो. हाँ, minus dP by dV by V. This is bulk modulus. So we are trying to find out what will be the value of dP by dV by V if we are starting from what? Isothermal process. So if we differentiate both sides, this is a product. प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएटेड होगा. सो प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रेशर को छोड़ देते हैं, वॉल्यूम को V से डिफरेंशिएट करते हैं. लेट्स डिफरेंशिएट विद V. तो dV इज 1, V को dV से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा. सो P प्लस फिर V को कांस्टेंट रखेंगे और P को डिफरेंशिएट करेंगे इज इक्वल टू 0. You all agree with this? ताले what do we get the value of dP by dV by V is? See, পিটাকে যদি ওদিকে নিয়ে যাই তাহলে মাইনাস আচ্ছা এটা কাজ করি, পিটাকে এদিকে রাখি আর এটাকে যদি ওদিকে নিয়ে যাই তাহলে মাইনাস অফ ভি ডিপি বাই ডিভি, আর এই ভিটাকে যদি আমি নিচে নিয়ে আসি তাহলে কি হবে? ডিভি বাই ভি. So this is what এটাই হচ্ছে bulk modulus. So can I say that for gases bulk modulus is nothing but the pressure. So therefore velocity of sound
which is root over of V by rho can be written as root over of V by rho. This implies P is equal to V. Alright? समझ आया क्या? Now started experimentation. So whenever we have a theoretical formula, we cannot assume it directly. What we do? हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि जो वैल्यूज आ रहा है वो वैल्यूज यहाँ पर डालने से आंसर जो है वो मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है. In general, the velocity of sound in air is found to be near about 330 meter per second. But when we use this formula and try to figure out, it comes much less than that, around 300 or even less than 300 meter per second. In air. ठीक है? So that does not satisfy the experimental value. Alright? So since it was not satisfying the experimental value, obviously we cannot take this as a formula. इसको फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग ले नहीं सकते. अगर बहुत थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आता है, we can do it. बट अगर एकदम ही मैच नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा चेंजेस, वैल्यूज डिफरेंस आ रहा है, यू कैन नॉट टेक. सो लैपलेस ही केम अप विथ एन आइडिया. Laplace correction. So Laplace made a correction. He told that since the sound has got a very high speed, about 330 meter per second, 1 meter is about this much a distance. So if we are going 330 meter per second, that's actually a very high speed. And at that high speed, if the compression and rarefactions are taking place, then it cannot be an isothermal process. It has to be an adiabatic process, because it's a fast compression means time nahi milta hai for heat exchange to take place. So you need to consider it as an adiabatic process. So Laplace made the assumption that the passage of sound through gas obeys adiabatic process. Adiabatic process. That is, PV to the power gamma is equal to constant. Okay? So, if we differentiate this, P into gamma V to the power gamma minus 1 plus V to the power gamma dPdV. You agree with this? कैसे हुआ? प्रोडक्ट रूल. पहले P को कांस्टेंट लिया, V टू दी पावर गामा को डिफरेंशिएट करने से क्या होगा? X टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करने से n x टू दी पावर n माइनस 1, तो वही गामा V टू दी पावर गामा माइनस 1 प्लस V टू दी पावर गामा कांस्टेंट रख देते हैं और dPdV इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कांस्टेंट, उसको डिफरेंशिएट करने से 0. राइट? नाउ व्हाट हैपेंस, सी इफ यू गो फॉर सिंप्लिफिकेशन, if I keep the dPdV on the right hand side, so P gamma V to the power gamma minus 1 is equal to minus V to the power gamma dPdV, right? Now, if we divide by divide को लिखिए यहाँ पे gamma P is equal to minus of V to the power gamma dPdV by V to the power gamma minus 1 और यहाँ dV. Now see, V to the power gamma minus 1, V to the power gamma cancels, and 1 minus 1 means 1 by V, that stays at the denominator, so it becomes gamma P equal to minus dP by dV by V. Clear? So हम लोग का बल्क मॉड्यूलस क्या होगा? Therefore B is equal to gamma into P. जो पहले हम लोगों को सिर्फ P मिल रहा था, बट नाउ द बल्क मॉड्यूलस इज गामा P. हाँ, बल्क मॉड्यूलस. Sir, how did Laplace make this assumption? Observation, obviously. Observation, যে প্রসেসটা আইসোথার্মাল যদি হয়, and isothermal are what?
equilibrium processes, right? So can any equilibrium process be this fast? এত ফাস্ট কখনোই কোনো ইকুইলিব্রিয়াম প্রসেস হতে পারে না, রাইট? সো উই শুড বি চুজিং ইট অ্যাজ অ্যান অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস, which is a better assumption. Now v equal to gamma into p. Now what's next? Therefore velocity of sound क्या हो जाएगा? Velocity of sound is root over of v by rho, which is equal to root over of gamma p by rho. Now when we use this value, we found the velocity of sound to be very close to the experimental value. The value from the value of velocity of sound from this formula matched the experimental value. Experimental value. Hence, the formula. Was accepted. अच्छा, सिर्फ एक छोटा सा चीज आई फॉरवर्ड टू मेक यू राइट, वो इसके न्यूटन्स फॉर्मूला जहां पर ये मिला ना वैल्यू हम लोगों को, वहां पर सिर्फ लिख लेना बट Rejected. the value of velocity was less than the experimental value. Experimental value. It लिख रहे ना, but the value of velocity was less than the experimental value. Don't forget to write this. Yes.